where the sun beats and the dead tree gives no shelter, the cricket no relief, and the dry stone no sound of water. Only there is a shadow under this red rock. Come in under the shadow of this red rock, and I will show you something different from either your shadow at morning striding behind you, or your shadow at evening rising to meet you. I will show you fear in a handful of dust. Okay. Man is a handful of dust. So, in other sense of the word, this means that the man is nothing. Behral, upar aap aaye. Only there is a shadow under this red rock. Red rock stands for the faith. It stands for the Christianity. It stands for the church. इस हवाले से जो वो there is my own finding, कुछ मैं इस एतबार से कुछ आपको बात बताऊंगा कि it is said since I have read about Christ, Jesus Christ, 2 books, 2 books मैंने पढ़ी थी और उसमें जो वो it is mentioned in both of them. आप आगे पढ़ेंगे इसमें reference है, clear reference उसमें मौजूद है. When at the night time, when the Christ was there in the Garden of Olive, and the Judas went to Sanhedrin. Judas था ना जिसने one of the 12 apostles के उसने जाके बताया था कि क्राइस्ट के छुपे हुए हैं और उन्होंने आके फिर Sanhedrin के लोगों ने आके क्राइस्ट को पकड़ लिया था. Christ was arrested. As Bible says, मैं ये बात बता रहा हूँ आपको. तो उसमें ऐसा हुआ कि he was in the Olive Garden along with his 12 apostles. और देयर वाज अ लास्ट सपर कि जिस पे पेंटिंग भी बनाई है लियोनार्डो डा विंची ने, उसका नाम ही द लास्ट सपर है, जिसमें ये सारे लोग खाना खा रहे हैं रात का. आप नेट पे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. नेट पे द लास्ट सपर लिख के फाइंड आउट करें, आपको पेंटिंग मिल जाएगी. लियोनार्डो डा विंची ने बनाई थी. ओके. और उसके मिड में द पर्सन इज द क्राइस्ट, वो क्राइस्ट है. बहरहाल तो एट द नाइट टाइम व्हेन one of the apostles of the Jesus Christ, his name was Judas Iscariot. एक और Judas भी था, Judas the Pious, वो अलग है, ठीक है. तो Judas Iscariot इसका नाम है. तो he actually betrayed Christ. He went to the Sanhedrin overnight and he told them about the whereabouts of the Jesus Christ and his apostles. And the people came from Sanhedrin and arrested Jesus Christ at the night time. तो अब जाहिर है कि उस वक्त जो है वो ये बात पूछी गई थी जूडस इस्कैरियट से कि हाउ दे वुड नो आउट ऑफ दोस पीपल दैट हु वाज क्राइस्ट. उनको तो क्राइस्ट को फेस से तो नहीं जानते थे ना, तो पूछते हैं कि किस तरह से हम पहचानेंगे. तो उस वक्त का ये एक हुआ करता था, एक कस्टम हुआ करता था कि पीपल वुड किस देयर रैबाइज, जो उनके जो रैबाइज होते थे उनको किस किया करते थे. सिंस द क्राइस्ट वाज टेकन एज अ रैबाई बाय हिज अपोस्टल्स, तो उसने आगे से कहा था whosoever I shall kiss shall be the one. So he went to the Christ in the night time having all those people, and he went inside the garden and he kissed Jesus Christ. And the Christ said at that time, since Christ knew that he had betrayed him, so Christ said कि Judas, you betray with a kiss. ये बहुत अहम बात है. इसके लिए इस पे एक फ्रेज भी आई है इंग्लिश लैंग्वेज में जिसको हम जूडस किस कहते हैं. इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ बीट्रेयल. द एक्ट ऑफ बीट्रेयल, जूडस किस इसको कहते हैं ना. तो क्राइस्ट ने कहा था जूडस यू betray and kiss at the same time, or you betray with a kiss. So बहरहाल at that time before they had arrived, तो उस वक्त ऐसा था कि Christ went the one side of the garden. There he would offer his prayer. He was heavily sweating, और वो जो रॉक के ऊपर बैठे हुए थे, तो जिस रॉक के ऊपर उनका स्वेट गिर रहा था, तो the sweat turned out to be a blood. तो इस तरह से बहरहाल that was written in the books about Jesus Christ. So the red rock may stand for that rock. If you say that the rock of faith, so that is that rock. So last time pe when the Jesus Christ was
talking to God when he knew that he will be arrested after some time. So there were the last moments that he had. So maybe that this red rock stands for that rock. हो सकता है उस rock के लिए भी है ना. तो तभी कहा ना कि red rock stands for the faith as well. So why it is red, and that is what I have explained. मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है कि उसको रेड क्यों कहा है. रेड नॉट इन सेंस ऑफ जिस तरह हम डेंजर के सेंस में हम उसे लेते हैं, तो ऐसी बात नहीं है यहाँ पे. And I will show you something different from either your shadow at morning striding behind you or your shadow at evening rising to meet you. I will show you fear in a handful of dust. Students, come in under the shadow of this red rock. Now I think you understand what does that mean. The red rock mean faith. Those faithless people, उनको ये address किया है ना Tiresias ने. And I will show you something different from either your shadows at morning striding behind you and your shadows at evening rising to meet you. Friends, जब इंसान जवान होता है तो the man is robust, proud. तो उसका shadow के behind you, shadow पीछे जाता है ना उसका. Shadow at morning. Morning stands for the prime of one's life. That is youth. तो यूथ में जब इंसान जब वो अकड़ा हुआ होता है और प्राइड में होता है तो उसका शैडो जो वो उसके पीछे पड़ता है ना. तो जब बूढ़ा होता है एट इवनिंग का मतलब बुढ़ापा है ना यहाँ पे, तो राइजिंग टू मीट यू, तो वही शैडो आगे आ जाता है क्योंकि इंसान के कमर में खम आ जाता है. नाउ यू अंडरस्टैंड इट. वही बात जो कि शेक्सपियर ने कही, हु स्ट्रट्स एंड फ्लेक्स हिज आवर अपॉन द स्टेज एंड देन इज हर्ड नो मोर. तो मैन इज ऑलवेज fearful. इंसान तो fearful है. इंसान के साथ what the destiny has done with a man. टाइम क्या कर देता है इंसान के साथ, क्या से क्या बना देता है. तो मतलब ये कि एक वक्त वो होता है जब इंसान यंग होता है, जवान होता है, तो वो सीधा खड़ा होता है तो उसका साया पीछे पड़ता है ना. तो जब फिर कमर में वक्त के साथ साथ खम आता है तो फिर वो साया आगे की तरफ आता है. तो इसलिए उसने कहा कि योर शेडो एट मॉर्निंग स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू और योर शेडो एट इवनिंग राइजिंग टू मीट यू. दैट इज व्हाट ही हैड सेड. तो उसने कहा आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट. So it means the different from the fear that is always there with a man regarding his subsistence and regarding his welfare and regarding his own very being. तो तभी उसने कहा कि I will show you fear in a handful of dust. That the man is always fearful. इंसान क्या होता है, वक्त से क्या बना देता है. इंसान के कमर में खम आ जाता है. Man grows weak and senile with the passage of time. इंसान जब जवान होता है तो जिंदगी की बातें करता है. ये मैं आपको बताऊं, उसके अंदर जिंदगी होती है. जो इंसान आगे बुढ़ापे की तरफ जाता है तो frankly speaking he thinks about death. वो डेथ के बारे में ज्यादा सोच रहा होता है. Because he knows what will happen with him. उसे ये तो कम से कम पता होता है ना. आजकल जो एक गैर मामूली हालात हैं पूरी दुनिया में, हॉस्पिटल वहां पे सारे एक तरह से क्लोज ही आप उन्हें समझे आम आदमियों के लिए. तो कौन सी बात है जो आपके बड़े बुजुर्ग बहुत ज्यादा सोचते होंगे, यही कि मैं बीमार पड़ गया तो किधर जाऊंगा. और ये बात आप सोचते भी नहीं होंगे, आपके जहन में भी ये बात नहीं आती होगी. बिकॉज यू आर यंग. You don't think that you are at the mercy of something that is destiny. You think that you are powerful. आप में power है, ताकत है. You can stand the test of time. आप ये समझते हैं. तो आपको इस चीज का ख्याल भी नहीं आता होगा स्टूडेंट्स. लेकिन आपके बुजुर्ग ये जरूर सोचते होंगे कि अगर वो बीमार पड़ गए तो इस टाइम पे कहाँ जाएंगे. तो इसका मतलब यह है कि इंसान में ग्रेजुअली इस तरह के ख्यालात पैदा होते हैं. इंसान को इस चीज की समझ आती है कि मैन इज नथिंग. इंसान को ये बात समझ आती है कि द मैन इज ऑलवेज बैटलिंग फॉर सब्सिस्टेंस, बैटलिंग फॉर टू मेंटेन हिज हेल्थ एंड हिज लाइफ. मैन इज ऑलवेज एट द मर्सी ऑफ टाइम.
तो तभी the person that who is young, so he stands upright and he casts his shadow at his back. When he grows old and weak and senile and he becomes fearful, his shadow comes in front of him. तो फिर कमर में खम आएगा, तो फिर तो शैडो आगे की तरफ ही आएगा ना. तो जब शैडो आगे की तरफ आता है तो इंसान फिर fearful हो जाता है. So that is why that he said that come in under the shadow of this red rock and I will show you something different. इससे different बताऊंगा तुम. From either your shadows at morning striding behind you or your shadows at evening rising to meet you. I will show you fear in a handful of dust. So it means I will show you that there is nothing in man's prides and there is nothing equally in man's fears. This is what I will tell you. I will unravel this riddle of existence and tell you that both fear and as well as pride are meaningless. मेरा ख्याल है इस बात पे आपको सोचना चाहिए. There is a shadow under this red rock. So red rock, I have explained that this was the last time of the Jesus Christ. When the Jesus Christ was arrested and there was overnight trial in the Sanhedrin, and since Sanhedrin had no power to execute any person, this power was actually at that time vested in the Pontius Pilate, that who was governor from the Rome. इस बात की मैं वजाहत करूंगा. तो ये उस वक्त का एक वो टोकन किंग था. हेरोड द ग्रेट का वो बेटा था. हेरोड द ग्रेट के जमाने में जब वो क्राइस्ट की पैदाइश हुई थी बैतलहम में, तो हेरोड द ग्रेट का बेटा था हेरोड एंटिपस, परहैप्स ये नाम था उसका. तो हेरोड एंटिपस वाज एक्चुअली he was not he was the king, but he was just a token king. ये अजीब सी एक तरह उस वक्त की एक सिलसिला था कि क्योंकि ये जो जुडिया जो है जहां पे क्राइस्ट पैदा हुए, ये पूरा जो इलाका जो था, तो जिस जगह पैदा हुए उस जगह का नाम तो बैतलहम था ना, और जिस जगह पे रहे तो उसका नाम था नाजरेथ. तभी इनको जीसस ऑफ नाजरेथ भी कहते हैं. तो ये बहुत बड़ा जो इलाका जो था, तो दैट वाज जुडिया, इसको जुडिया कहते थे. तो जुडिया में जो हेरोड द ग्रेट वाज एक्चुअली द किंग, ही वाज जूइश किंग. कुछ राइटर्स ये भी कहते हैं कि ही वाज द कन्वर्ट जू. ये कन्वर्ट था इसलिए कि ही वाज टू हैव द किंगशिप, एंड फॉर दैट पर्पस ही बिकेम अ जू, because the people living in Judea were Jews. वो Jews थे. Christ was Jew जब Christ पैदा हुए तो. Okay. तो at that time एक king तो ये था, लेकिन इसके पास सारे इख्तियारात नहीं थे, इसलिए कि Judea was under the Roman Empire. रोमन एम्पायर के अंडर था ना जुडिया. तो रोमन्स का एक अपना वहां पे गवर्नर भी था. तो ये किंग के इख्तियारात नहीं थे वो किसी को सजाए मौत दे सकता. That power was vested in the governor. Governor के पास ये power थी. So since that overnight trial that was conducted in Sanhedrin, उनकी बड़ी council of priests थी जेरूशलम में. ठीक, तो उसको Sanhedrin कहते हैं. तो Sanhedrin was headed by Caiaphas or the Caiaphas, whatever his name was. तो कुछ राइटर ये भी कहते हैं कि that was actually his father at the time, कि when there was a trial, जब trial हुआ Jesus Christ का, तो it was his father. Some people say that no, it was he who was actually the high priest, जो इनका high priest था. उसके पास ये इख्तियारात नहीं थे कि to execute a person, कि किसी आदमी को सजाए मौत दी जाए. So overnight trial जो Christ का वहां पे हुआ, over hasty trial, तो उसका फिर नतीजा ये निकला कि they have decided that since they cannot execute Jesus Christ, and he must be handed over to the Pontius Pilate, that who was Roman governor, so that he may execute him. So that was actually done. फिर उसके बाद they went to the governor and they said that the man was actually charged of treachery, and वो ये बताया गया कि he professes himself to be the king. It was also said by some of the writers that Pontius Pilate was actually reluctant to give death sentence to the Christ. उस वक्त जब एक और आदमी भी पकड़ा हुआ था who had killed the Roman soldiers, तो
he had put that trial before the public, क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा ये टर्बुलेंट किस्म के लोग थे, वैशी किस्म के लोग थे जुडिया के, उसे पता था ये हमारे लिए मसाइल बनाएंगे. तो the public actually demanded that Jesus Christ must be executed, he must be crucified, whereas the other person should be released. So that was reluctantly done by the Pontius Pilate, who was the Roman governor. Or if I tell you further, Pontius Pilate was actually direct relative of Tiberius Claudius Caesar, or Tiberius Claudius Caesar was the king of Rome at that time when the Jesus Christ born. तो बहरहाल कुछ डिटेल में मैंने आपको चीजों को बता दिया है. तो that was the last time, that refers to the last time of the Jesus Christ. ये जो Red Rock की बात है ना, because at that time Jesus Christ was arrested in the Garden of Olive. और फिर जूडस को जब ये बात पता चली कि what the hell he had done, तो he hanged himself with a tree. उस ट्री को भी जूडस ट्री कहा जाता है क्रिश्चियनिटी में. ओके, तो कुछ डिटेल के साथ मैंने आपको चीजों को बता दिया. तो आई टोल्ड यू दैट जीसस क्राइस्ट एट दैट टाइम एट इन हिज लास्ट सपर, आप वो पेंटिंग देखिएगा लियोनार्डो डा विंची की, द लास्ट सपर. तो मिडिल में जो आदमी आपको नजर आएगा, दैट इज द जीसस क्राइस्ट. At that time, Jesus Christ actually prophesied that one of the apostles is going to betray him. So that apostle later turned out to be Judas Iscariot, jo ke he sneaked out in the night time to Sanhedrin and he reported about the whereabouts of the Jesus Christ so that they would arrest him. और कुछ उसको coin उसको मिल गए थे, कुछ coins की खातिर उसने इतना कुछ कर दिया. So at that time in the night, Christ, it was said that Christ was entirely restless, both restless the. He went in to the one corner of the garden and he prayed there for the whole night till the time he was arrested. He was in heavy sweating and that sweat will drip on the rock and it is said that it turned out to be a blood. But ये एक unreasonable बात है. लेकिन बहरहाल it is said about that. It has tradition. इसकी एक tradition इस तरह से कि वो जो sweating जो थी वो खून के कतरे बन रहे थे ना, तो the rock was reddened by that sweating, by that turned out to be a blood. So out of this that it said that red rock, one thing. So red rock actually refers to the faith, the true faith, as well as this refers to the end of life, because that episode of the red rock stands at the last moments of the Jesus Christ burial. According to Christianity, that is what I'm saying. अब देखें, Christ was actually standing at the maze, at the labyrinth of the life and death. So he was entirely restless. It revealed upon him the true meanings of life and death. तभी कहा है ना कि shadows at the morning striding behind you are the shadows at evening rising to meet you. तो इंसान fearful होना शुरू हो जाता है. तो fear stands for no meanings as well as pride stands for no meanings. वो life का जो pride है और death का जो fear है, इसका मतलब ही कुछ नहीं है. This is what he means to say in these lines. Come in under the shadow of this red rock means that come in under the faith. And I will show you something different from either your shadows, different from either your pride and as well as your fear. So I think now you somehow understand कि एक ऐसा भी कभी वक्त आ जाता है that comes out of man's honest and true desire to understand the secrets of life, that man comes up to this realization that the fear and the life and the death and the fear and the pride, they stand for no meanings at all.